Hello students, welcome back. Today in geography, we will learn about the natural vegetation in India. This is the first part of the chapter. So let's learn about the concept first. What do you mean by the natural vegetation? So natural vegetation refers to the plant community. So it is the plant community which has been grown naturally without any human interference and has been undisturbed by human for a long time. So we can say that natural vegetation जो होता है किसी जगह का, वो naturally जो पेड़ पौधे होते हैं वो naturally grow करते हैं बिना किसी human aid के, और वो human interference से भी वो अछूते होते हैं. Means nobody has interfered in the growing of the trees and plants naturally in that region. So this is referred to as natural vegetation. Now we'll see कि natural vegetation और forest में क्या difference होता है. So vegetation refers to the assemblage of plant species living in association with each other in a particular climatic condition. It is not limited to forest. It includes all the plants cover normally we call grassland, forest, etc. Means कि vegetation जो होता है वो एक vague term है, एक बड़ा सा concept है. Forest is a part of vegetation. So forests are one of the many types of vegetation. It refers to a large area covered with trees and lots of undergrowth. They are characterized by the climatic condition, topography and soil. So here vegetation और climate forest में जो अंतर है वो है vegetation is a broader concept और vegetation कई तरह के होते हैं. Forest हो सकते हैं, grassland हो सकते हैं, but forest is a type of vegetation. So I hope children this is clear. So we have learned कि what is the concept of natural vegetation और हमने ये भी देखा कि vegetation और forest में क्या difference है. अब हम लोग देखेंगे कि natural vegetation का importance क्या होता है किसी भी place के लिए. It is an important component of natural environment. So natural environment का एक important component है. It's a very important resource. Plants provide us a lot of products including food and fiber. So definitely from natural vegetation we find lot of different types of trees and plants जिसके अलग अलग values होते हैं. Medicinal value, food, they provide us with fodder, fiber, etc. It provides shelter and food to wildlife. Extremely important for wildlife. कहा जाता है कि forests are natural habitat of wild animals. यानी wild animals का जो natural home होता है वो है vegetation या forest. As forest is a part of vegetation. Now vegetation is an index of the climatic condition of an area. Vegetation is a result of climate, or we can say by looking at the vegetation of an area we can tell about the climate of that region. For example, इक्वेटर के पास बहुत बारिश होती है, वेरी हैवी रेनफॉल, तो वहाँ के वेजिटेशन जो ग्रो करता है वो होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट. वी कॉल इट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बिकॉज इट ग्रोज नियर द इक्वेटर बिकॉज ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल. तो क्लाइमेट का एक इंडेक्स होता है वेजिटेशन. द वेजिटेशन रिफ्लेक्ट्स द टाइप ऑफ क्लाइमेट इन दैट एरिया. So students, these are the, we can say, importance of natural vegetation. Now what are the favorable factors in India? यानी हमारे देश में, इंडिया में क्या favorable factors है vegetation के grow करने के लिए. So the first one is temperature. So the first factor, so let's see कि temperature कैसे affect करता है natural vegetation. Different temperature conditions are found in India that favors the growth of variety of forests like tropical, subtropical, temperate and alpine. अगर हम नॉर्थ से साउथ में इंडिया के चले जाए, ईस्ट से वेस्ट, तो काफ़ी टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. तो अलग अलग तरह के क्लाइमेट हैं, इसीलिए वेजिटेशन में भी काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है. नॉर्थ इंडिया में mountainous area we see mountain forest, that is alpine forest. As we come to the South India, western Ghats में मिलता है evergreen forest.
डेल्टास के पास है मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो वैरायटी ऑफ वेजिटेशन वी फाइंड ग्रासलैंड्स, वी फाइंड थॉर्न वेजिटेशन, दैट इज डेजर्ट वेजिटेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सो लाइक दिस तरह तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं इंडिया में, ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशंस वैरी करता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया. सेकेंड फैक्टर है सनलाइट. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट प्रोवाइड अबंडेंस ऑफ सनलाइट. तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने के कारण, यानी इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दिस डिवाइड्स इंडिया क्लाइमेटिकली इंटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. दैट्स वाई यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत लश होता है, मीन्स डेंस वेजिटेशन इज सपोर्टेड बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. इसका मतलब है कि सन रेज जो है it is provided for long hours, means days are quite long in summer and bright and warm, and this support the growth of dense vegetation, both tropical and subtropical. So the sunlight, abundance of sunlight, it helps the trees to grow faster. So this is a positive factor that helps in growth of vegetation in India. The third factor is precipitation. This includes rainfall as well as snowfall. So areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to areas with less rainfall. अगर हम साउथ इंडिया में देखें वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड में, विच इज़ अ windward side of the southwest monsoon, it has lush dense vegetation. और there are different parts in India जहाँ पे vegetation dense है because of good amount of rainfall, whereas जहाँ पे rainfall कम है वहाँ vegetation है scanty. So this is another factor which leads to the variation in vegetation all over the country. कंट्री में हर जगह एक तरह का वेजिटेशन नहीं है. इसका रीज़न है कि रेनफॉल, जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो वैरी करता है पूरे देश में. द नेक्स्ट फैक्टर इज soil. Different types of soil support different types of vegetation. यहाँ एग्जाम्पल है, desert soil supports xerophytes. Xerophytes are the trees and plants that can survive in less water. क्योंकि डेजर्ट्स में वी नो चिल्ड्रन, डेजर्ट्स में रेनफॉल बहुत ही स्कैंटी होता है, इसीलिए ये डेंस वेजिटेशन सपोर्ट कर ही नहीं सकता. दे कैन ओनली सपोर्ट दोज प्लांट्स एंड ट्रीज विच कैन सर्वाइव इन लेस वाटर और विच कैन स्टोर वाटर टू सर्वाइव इन द ड्राई कंडीशन. यहाँ के पेड़ पौधों ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है नेचुरल एनवायरनमेंट में, ताकि वो कम पानी में सर्वाइव कर सके. तो जैसा सॉइल होगा वैसा ही वेजिटेशन होगा. And this is seen very clearly in different parts of India. The next factor being relief. ये जो relief है ये बहुत ज़्यादा influence करता है vegetation को. How? Let's see. Plains have different type of vegetation, like dense forests can grow if there is good amount of rainfall. Plateaus have different type of vegetation, and mountains, they have alpine vegetation. मीन्स विथ हाई ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड के साथ ऊपर जाते हैं वेजिटेशन जो है वो चेंज होता है, बिकॉज एट लोअर स्लोप्स वी हैव रेनफॉल बट इन द हायर स्लोप्स स्नोफॉल. सो द वेजिटेशन वैरीज. वेयर देयर इज़ रेनफॉल वहाँ पे अलग तरह का वेजिटेशन होगा, और जहाँ स्नोफॉल होगा वहाँ पे अलग तरह का वेजिटेशन होगा, क्योंकि स्नो को सर्वाइव करने के लिए द ट्रीज दे अडैप्ट देमसेल्व्स टू द एनवायरनमेंट. एंड ऑल दिस वील लर्न लेटर. जब हम लोग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे तो वी विल लर्न कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन ने अपने आप को एडजस्ट किया, अडैप्ट किया है विद द नेचुरल एनवायरनमेंट, विद द क्लाइमेट, विद द सॉइल. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास.